So next question. Yeah, last two yeah, आपका MCQ question within 5 year question. Yeah. अरे वीडियो लगभग 5 year question को देने की कोशिश करते हैं. Which term of UP 2 minus 1 minus 4 minus 7 is equals to minus 40? मतलब कौन सा टर्म इससे पिक होगा जो कि माइनस 40 होगा कि नहीं होगा ये भी हो सकता है. देखो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये थर्ड 11 13 एंड 15 इसका मतलब इसमें से कोई जरूर आंसर है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में रैंडमली वैल्यू देखिए सबसे पहले ऑप्शन सोल्यूशन क्या करते हैं गिवन इफ यू लिख देते हैं कैंसिल q minus 1 minus 4 minus 7 and 6 यहाँ पे बच्चों ना फर्स्ट टर्म आता है एंड b जो होगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 11 फिर b जो होगा बच्चों मेरा माइनस 0 एंड n हमें कौन सा टर्म बच्चों जनरल टर्म ऑफ T equals to A plus 1 into G. That means A n is minus 40 because यहाँ पर ये दिया हुआ है. और कौन सा टर्म माइनस 40 बेटा इस टर्म हमारे वो दिया हुआ है वही n हमें निकालना है कि टर्म कौन सा है. तो चेंज है मेरा ये n या चेंज होता है n मिली n मेरा कितना है माइनस 40 ये मेरा कितना है 2 प्लस n माइनस 1 जी कितना है मेरा माइनस 3 और इसको हम सॉल्व करके निकालेंगे. बच्चों ये क्या होगा minus 40 plus 2 minus 3n so multiply and over with 3n plus 3. Our situation is minus 40 is 2 3 5 minus 3 4 3n comes to here root 5 plus 40 it is you can equal to 32 and not n equals to 45 by 3 it is 15. That means n equal 15 terminal. इस ऑप्शन में आपका यहाँ पर टी ऑप्शन में आपका ये करेक्ट है. ठीक है बच्चों. Now, students, next question. If a semicircle is brought along its diameter, एक semicircle है, इसको diameter के along इसको मोड़ा पुल किया, then figure is formed in which forms. बच्चों, सॉल्यूशन का मोड़ा आपको a semicircle is rolled along its diameter. Nature. Plan. You know it's formed. Conical. Conical being having a strength also known it is the form taking a type of this form is called conical. Later it will be called the diameter, it is a conical shape.
So the answer B is the correct conical section. Next question also. The area of threaded, portion. This is the figure, and this is the radius of inner area, 31 centimeter, and the path difference with the inner and exterior radius is 4.5 centimeter. So find the area of threaded portion with these options. First of all, R is the capital letter, exterior limits. So 31 plus 4.5 centimeter. It means 35.5 centimeter. This is the exterior, and the small r is the inner radius. Inner radius is 31 centimeter. And the area of part, area of part equals to R. Capital R minus R. It's more because area of upper diameter and R is the second minus 16. Put in the value of R and small 522 over 7 and capital R 35.5 minus 31 इससे सोल्व करने का एक आसान है 22 by 7 into एक बार ये इसको जिस पर आप प्रोवाइड करेंगे अप्लाई कर दें ये प्लस बी इंक्रीमेंट भी 35.5 and plus 31 66.5 into a minus b 35.5 minus 31 4.5. So the point 10 and this is the point 10 and 7 minus 63 and 7 and 5 to the 5 19 5 to the 5 9 and all the and 3 11 there. 11 into 9 into 19 into 9 over 3 centimeter. 11 9 the 99, it is 9900 approx 954.5 centimeter square. So you can now find option will be the correct one. Next question is the distance between two parallel lines to a circle of radius 7 centimeter. All that between the circle having radius 7 centimeter and two parallel tangents. Nothing really in which sides taking the side in our tangent. Suppose that this is the and this is parallel tangent. Then the distance between two. It means this is the radius and this is the also radius. It means the distance between two are going to radius. Distance between two parallel tangents of alpha
radian. Radian is the common like 14. This is the answer of C into 14. The question is related to geometry of class 10th. If theta equals to 15 degree, then cos 3 theta minus 2 cos 4 theta over sin 3 theta plus 2 cos 4 theta is equal to. Here is given theta equals to 15 degree. Find out the value. So the solution given equation of 3 theta minus 2 cos 4 theta over sin 3 theta plus 2 cos 4 theta. It is the value of theta equals to 15. So cos 3 into 15 cos 45. 2 cos 15 under 60 cos 60 over sin 15 theta sin 45 plus 2 cos 15 under 60 and solve it cos 45 1 by 2 minus 2 into cos 60 1 by 2 sin 45 1 by 2 plus 2 cos 1 by 2. It will LCM of 1 by root 2 minus 1 by root 2. It equals to LCM of 1 minus root 2 by 1 plus root 2 over 2 over root 2. Root 2 is not cancelled, so the final answer 1 minus root 2 by 1 plus root 2. The option D is correct. बच्चों आप लोगों को यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया, चाहे क्लास 10 का हो, क्लास 12 का भी मैं दे रहा हूँ ताकि बच्चे को एग्जाम के पीरियड में बर्डन हो। अभी से मैं स्टार्ट किया हूँ, लगभग विदिन 5 दिन हुआ होगा, 1 वीक अप्रॉक्स। तो इसमें जो है लगभग हम 25 के अप्रॉक्स क्वेश्चन दे चुके हैं या दे रहा हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। इस तरह से लगभग और पूरी जो है अपनी वर्क इसमें हम लगभग 200 अप्रॉक्स अबाउट या 200 प्लस में आपका जो है आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। आफ्टर दैट नवंबर में आपका शॉर्ट में जो है क्वेश्चन आपका लगभग उसमें भी हम चाहेंगे आपका हो जाए अप्रॉक्सिमेट 100 क्वेश्चन 100 प्लस एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन वो भी आपका अप्रॉक्सिमेट 100 के अप्रॉक्स या 100 प्लस, ठीक है बच्चों। ताकि आप लोग का इसको बना लेने के बाद ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका 100% क्वेश्चन को सोल्व करने की आपकी जगह लाइन बना देगी, क्योंकि ये नहीं करेगी यही क्वेश्चन आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन बनाने से आपका जो है माइंड का जो है आपका जो है हाई होगा, ठीक है बच्चों। इसलिए आप इसको बनाइए और बाद में यदि मुझे कुछ टाइम मिला तो चक्कर वाइज है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके बच्चों, आप लोगों को लाइक यदि उनका ये पसंद अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी से आप शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों।